So guys, subscribe to Siddharth Kannan's YouTube channel now, abhi. लोगों का कहना है कि रुबीना तुम्हारी मोहतरमा बहुत डोमिनेटिंग है. Yes. इस पर तुम्हें क्या कहना है? डू यू थिंक इट्स अ राइट स्टेटमेंट की गलत है? बिल्कुल. It's the dumbest statement to make. It shows that you're not using your brain. If you're calling somebody dominating, then why are you letting him or her dominate you? आप सब घर में contestants हैं, आप सबको equal अधिकार बिग बॉस ने दिए हैं. उन्होंने कहीं भेदभाव नहीं किया कि यार दिन में 10 घंटे में से 6 घंटा सिर्फ ये बोलेगी, ऐसा तो नहीं लिखा है. क्लियर बोला गया है कि आप सब एक हैं. आपको जो करना है, अपने प्रॉब्लम्स, आपके मुद्दे आप खुद सॉल्व करेंगे. So if she becomes dominating and you are letting her dominate you, then you are kind of stupid, man. Where's your gameplay? You इतने डंके की चोट पे बोलते हैं gameplay. Where is that then? They say she's controlling. Why are you getting controlled? Why have you given your remotes to her? So I think it's a very dumb statement to make that she's dominating. हाँ, आप ये बोल सकते हैं कि she's very resilient. वो लगी रहती है अपनी बात मनवाने को. But मानना ना मानना तुम पर है. But dominating means you let her dominate you, then I think she's smart. You guys are dumb. मुझे बताओ जी. Honestly, हर वीकेंड पर सलमान खान आपके और रुबीना दलाइक से खफा थे. इनफैक्ट वो बार बार कुछ ना कुछ आपको बोलते थे, which pointed कि तुम लोग गलतियां कर रहे थे लगातार. उस पर तुम्हें क्या कहना है? See, डांट उसी को पड़ती है जिससे उम्मीद होती है, जिसको देखा जाता है कि यार ये बहुत अच्छा है, अच्छा करेगा, लेकिन ये अगर गलतियां थोड़ी बहुत जो कर रहा है सुधार ले तो अच्छा हो. एक नजरिया ये है उसको देखने का. दूसरा नजरिया ये है कि मुझे तो जितनी डांट पड़ी मैं उसको भी स्पिरिट में लेता था कि यार इसमें से जो डांट पड़ी है, जो मुझे लगता है इसमें से सीख जो है वो सीख मैंने ले ली है. अब अपसेट होके बैठा रहूंगा मुंह सुजा के, इट डजंट हेल्प मी. सो get the learning from it and move on. क्या तुम्हें लगता है कि मेकर्स ऑफ बिग बॉस तुम दोनों को टारगेट कर रहे थे? क्योंकि बार बार द बिग होस्ट कमिंग आफ्टर बोथ ऑफ यू, राइट है गलत है वो अलग बात है. डू यू थिंक द मेकर्स वर टारगेटिंग यू ऑल? वेल, व्हेन यू आर इनसाइड द हाउस, नो. ये मुझे बाहर आके सुनने को आया है, बहुत लोगों से पता चला है. लेकिन अगेन आई विल से I honestly thought that he sees scope in us. He has a lot of, उनको हमसे बहुत उम्मीद है, इसीलिए हमको इतना critically, सुनने को मिलता है. लेकिन एक और चीज ये भी है कि हमने अपने लिए ही जो स्टैंडर्ड सेट किए थे वो बड़े हाई थे. लाइक शुरू में अगर आपने देखा होगा, when Big Boss started, me and Rubina were the one who said, यार this is not good. If you are abusing someone, using of force in task is not good. Be a little civilized, be that. So जब आप खुद इतना अपने स्टैंडर्ड्स इतने हाई सेट करते हैं, तो जब थोड़ी सी भी गलती होती है तो डांट पड़ जाती है. एक और बहुत बड़ा कन्फेशन था रुबीना को. I've always loved you, Abhinav, like my own younger brother. We've known each other for years, my friend. उन्होंने कहा कि आप दोनों के बीच में डिवोर्स की बातें चल रही थी, एंड आप लोगों ने एक दूसरे को 6 महीना दिया था कि देखते क्या होता है फ्यूचर के लिए. Yes. What actually went wrong? जहाँ पे मुकाम इस तरह पहुंच गया कि you were actually talking about divorce? Well, if I honestly tell you, you will laugh. I forgot to bring her coffee. क्या बोल रहा है यार? I'm not kidding. So, see, there were things, we are two strong individuals. We have a very strong opinion. और दोनों की सोच आपने तो देख लिया होगा बिग बॉस में अलग अलग है. So जब वो सोच क्लैश होती है, sparks fly, and lockdown was a difficult task, a difficult phase for everyone. So it was for us, and we gave ourselves like 6 months. Let's see, let's be very mature about this. 6 महीने में if things don't improve, then we go our way, you go your way. Then Big Boss happened, so we decided, yaar, we fight over petty things. Let's enter the house. Once we see those big fights, maybe खुद की fights छोटी लगनी शुरू हो जाएंगी. और वो actual में हुआ, honestly. So उसको लगता था मैं unreasonable हूँ, मुझे लगता था वो unreasonable है. जब हम घर के अंदर गए, देखा साले ये तो बिल्कुल ही unreasonable है, हम तो बहुत सही हैं भाई, तो क्यों हम अलग अलग झगड़े, हम इकट्ठे होते हैं बल्कि. So that's literally what happened. But ये बताओ कि जब तुम उस ब्रिंक पे पहुंच रहे थे जहां पे two lovely people
Yeah. I've spoken to Rubina before. I've known you for years. You're lovely people separately as well. Do you think that ये लॉकडाउन के दौरान तुम्हें टर्मोइल कॉज कर रहा था कि यार डिवोर्स की बात तक आ गई थी? No, I think lockdown was a catalyst. Two people staying in one house under one roof and they are not allowed to step out. It was a testing time for us. So that's when the whole thing happened. But then we moved, then we went to our village. That maybe changing the whole scenery around you might help. Then Big Boss happened. So now, thanks to Big Boss, we have come out much stronger. So now, अगर मैं safely कहूं, divorce की बातें out of the window है मेरे भाई? Yeah, I'll skip bringing her coffee once. Let's see what happens. If she's mature about it, then we have moved on. But do you think she's going to be mature about it? I don't know. Maybe Big Boss के बाद. अच्छा हो, जो भी हो अच्छा हो बस. Thank you. आप दोनों की temperament सब जानते हैं, बहुत poles apart है, right? And you've admitted that as well. Absolutely. अभी भी temperaments अलग होंगी, अभिनव. When she comes out of the house, it's the same person. You're the same person. क्या कहीं आपने सोचा हुआ है कि maybe मैं अपना temperament change कर लूं ताकि ये relationship जिंदगी भर तक चले? So see, they say na men are from Mars and women are from Venus, right? Am I right? So उसका सबसे बड़ा उदाहरण इस show में ही हमको देखने को मिला, where there was a conversation between me and Ruby, where I was explaining her the logic of what had happened, and all she was saying was, "Shut up, hear me out, explain the logic later, or maybe do it tomorrow." I was like, "No, logic first, then comes the okay, baby, it's fine, everything will be okay." So what do you call that? Pep talk बाद में, पहले logical talk. वहीं पे सबसे बड़ा clash था. So when I came out, people told me like women are not like this. They are they पहले तुम उनको किस तरीके से बता रहे हो चीज, वो it's very important. So you can't go like like a major sahab and say this is logic, follow this. So maybe that's something I will work on, and maybe that thing changes the whole the clashes which we have between us. जब वो बाहर आएंगी, I know आपको फिर उनसे बात करना पड़ेगा. क्या आपको लगता है कहीं कि आप ये रिलेशनशिप को सैल्वेज कर लेंगे, बचा लेंगे, and both of you are going to be together forever? Absolutely. I think it's already done. We have already salvaged it. I've said it inside the show. I've fallen in love with her again. And I said it because there was no option but to, watch each other's back and see stupid people fight over a few things which were issues, actual issues, and few issues which they created themselves. So brilliant. Amazed at this human behavior of creating issues. I went inside like a problem solver. For that, people called me boring. I talked science because I come from a scientific background and I actually love science. People called that boring. Which people? People inside the house. When I came out, things were very different. So जनता ने मुझे accept किया है. I've adapted, I've learned in the show, I've grown in the show. और कैसे? क्या बात है, ऐसे बोलो अंगार. मेरे भाई, आपका और राखी सावंत का बॉन्डिंग भी बहुत अच्छा था. इनफैक्ट वो ओपनली डिक्लेयर कर रही थी कि उनको प्यार है आपके प्रति. शी लव्ड यू. यू आर ओके विद दैट. पर वो मोमेंट कब था जब ये आपके लिए अनबेरेबल हो गया या आप बोले अब मैं नहीं सहन कर पा रहा हूं? व्हाट वाज दैट मोमेंट? So basically she told me very clearly that I am going to put up an act of being interested and being in love with you. It will be very entertaining. So please play along. I said, देखो आपको करना है करो, as long as it's entertaining. लोग हंस रहे हैं लोग, तो यार प्लीज हंसाओ, किसको बुरा लगता है हंसना. और she clearly told me like these are the boundaries I'll never cross. आपको कभी लगे कि boundaries cross हो रही हैं तो please tell me. Exactly, that's what happened. I told her when the boundary she was crossing, and instead of stepping back, what she did, she got angry and she accused me of things जो मैंने good faith में की थी. And she tried giving those things a very dirty connotation, a vulgar one, I'll say rather. So of course things were going to, it won't go well with me because मैंने अगर किसी का अच्छे intention में काम किया है और वो मुझे accuse कर रहा है उसको in a dirty way, I won't take it. And I don't know if it has been seen, but I was a problem solver. I used to help everyone. मैंने सबको hair cut दिया है, राहुल को भी दिया जिसको मैं नहीं पसंद करता हूँ. So I was like that. So that's my basic nature. Why should I change that? And she took advantage of that, and that didn't go well with me. जैस्मिन बसीन का कहना था कि तुम्हें शायद एक लाइन ड्रॉ करना चाहिए था जब राखी ने बोला था अच्छा मेरी साड़ी बांध दो. Yes. What do you have to say to that? That was wrong. That was wrong on my part. I shouldn't have done it. But
मैंने इसी उसमें कर लिया कि यार यहाँ पे तो टास्क होते हैं, टास्क में तो लोग एक दूसरे के ऊपर लेट जाते हैं. आई डोंट नो इफ यू हैव सीन दैट बोट टास्क बिटवीन मी एंड निकी एंड मी वर लाइक पकड़ के दबा रही है, खींच रही है, टांग ऊपर जा रही है, सर के हाथ कहीं जा रहा है. So all the tasks, if you see in Big Boss house, are very physical. People, लोग एक दूसरे से भिड़ जाते हैं. There is a physical contact all throughout. And I thought साड़ी डालना एक एक ऐसे इंसान को जो बोलती है मैं मैरिड, मेरा पति है, ठीक है, मुझे पता है अपनी मर्यादाएं क्या हैं. I thought it would be like just ठीक है यार. But yes, that was my mistake. Those are the lessons जो लाइफ में सीखने चाहिए. I should have drawn a line there because it could have backfired and it did, So good faith वाला जो था वो मुझ पे ही उल्टा पड़ गया. तो yes, I admit my mistake. I should have drawn a line there. In fact, Rubina tried telling me that as well, and I think मैंने उसकी बात सुनी नहीं. So that's what in last few days I had a conversation with Rubina that women have very good instincts with all this. So next time please tell me. I know you did not because तू ऐसा नहीं चाहती कि मुझे लगे कि तू कंट्रोलिंग है और वो है क्या नाम why is she trying to like tell me what to do. That's why she did not like pressurize me, but yes, I should have listened to her. I admit my mistake. So these are Abhinav, I've always had a soft corner for you and you know that. But जब राखी ने ऐसे शब्द इस्तेमाल करे ठरकी और तुमने उसको बोला गंद, सलमान भाई ने आप पर चिल्लाया था. What do you have to say to that? See, maybe, again, we have set our standards so high that if we use that language, हमको ज़्यादा सुनाया जाएगा. मतलब मैं तो एक simple example देता हूँ. If I'm wearing a white shirt and if I go in a market, I'll be very careful कि दाग ना लगे, right? लेकिन जो इंसान काले रंग की शर्ट डाल के घूम रहे हैं उसको टेंशन ही नहीं है. So that is the analogy I can give that we had set our standards like a white shirt and उस पे अगर हम दाग लगा देते हैं तो उसके लिए डांट पड़ती है. So probably. If ever Rubina ने तुमसे बोला कि क्या मैं निकी तंबोली के साथ दोस्ती करूं जिंदगी भर के लिए, do you think she'll be a great friend of mine or not? आप रुबीना से अगर उन्होंने पूछा एडवाइस के लिए तो आप क्या जवाब दोगे? I'll say it's your call totally. I can't be friends with her because you are friends with her. मतलब of course ऐसे जान पहचान रहेगी, but if you have seen something in her and if you find her as a good friend, then I'm not going to interfere and tell you कि दोस्ती कर या मत कर. क्योंकि as much as I know Nikki, she's nice. I liked her. वो ठीक है, शो के हिसाब से वो करेगी वो सब, कभी इधर कभी उधर, हमने उसका नाम रखा था यहाँ वहाँ पार्टी. That is all okay. Do you think राखी सावंत ने अपनी मैरिज को फेक की थी, झूठ मैरिज क्रिएट किया था शो के सिलसिले में? Yes, that's what Rahul Mahajan said na on the show. That's what she had done. So anyway, that's her call totally, man. So random. क्या आप अपसेट थे जब रुबीना ने अपना हार्ट पोर आउट किया अबाउट योर डिवोर्स प्लान्स इन दिस कन्वर्सेशन दैट यू हैड? उस वक्त तुम अपसेट थे उनके साथ? No, I wasn't upset because she had told this thing to the makers when we were coming, and I was feeling sad about was कि I hadn't told it to my mother and father. I had told it to my brother. My brother knew about it. One of my very close friend knew about it because I thought कि यार अगर स्कोप है, अगर कहीं एक रे ऑफ होप है, and I just tell my dad and mom, they'll be like disheartened, they'll be like very worried, and ये मुझे अब उनको इस शो के थ्रू पता चलेगा, which I felt bad about, and I that day I had an emotional, I cried just because I should have told them, not the show. उनको शो के जरिए से नहीं पता चलना चाहिए था. तो तुम्हारे पेरेंट्स का रिएक्शन क्या था जब तुम घर के बाहर आए थे और उनसे बात किया था इस विषय में? So from Big Boss house, to be very honest, I haven't spoken to my father more than like 5 minutes because there are calls, there are 100-500 calls every day, and I told my father that he said बेटा तू आराम से सब अपना काम पहले इंटरव्यूज कर ले and then we'll talk. So I haven't even spoken to them like at length, but they are very happy. Both dad and mom, they are very proud. They said whatever you've done, it's amazing, it's brilliant. Who's going to win Big Boss? कौन जीतेगा Big Boss? Rubina Dilek. क्या बात है, क्या बात है. Nobody else.